Hello students, today we are going with the next chapters, that is a first chapter, that is a solution chemistry subject 12th class। ਸੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ LEP ਲਰਨਿੰਗ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ LEP ਨੋਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ MCQ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ 2 ਮਾਰਕਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਂਡ 3 ਮਾਰਕਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਫੁੱਲ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ LEP ਨੋਟਸ ਹੈ ਫੁੱਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੂ ਆਲ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਕੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ should have the highest boiling point। so option A 1 molar NaOH, जो 1 molar sodium sulfate है, 1 molar ammonium sulfate and 1 molar potassium nitrate। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ NaOH ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਇਨ ਹੈ ਤੇ I ਵੈਲਿਊ 2 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2Na ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਲਫੇਟ ਦਾ, ਸੋ I ਵੈਲਿਊ 3 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ I ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆਇਨ ਬਣਦੇ ਪਏ I2 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। KNO2 ਦੇ ਵਿੱਚ K ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤੇ NO3 1 ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋ ਟੋਟਲ I ਵੈਲਿਊ 2 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ I ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, that is sodium sulfate। so right answer that is a 1 molar sodium sulfate solution। next the unit of abelioscopic constant is, that is abelioscopic constant, that is a Kelvin kg per mole। so ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਡੈਲਟਾ TB equal to KB into M ਐਂਡ KB ਨੂੰ ਜਦ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡੈਲਟਾ TB over M। ਸੋ ਡੈਲਟਾ TB ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੈਲਵਿਨ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਕੈਲਵਿਨ KG ਪਰ ਮੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ the value of what are factor for KCl NaCl and potassium sulfate are respectively। ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ I ਵੈਲਿਊ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ KCl that is K ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ, I ਵੈਲਿਊ 2 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ I ਵੈਲਿਊ ਅਗੇਨ 2 ਆਇਨਸ 2 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। potassium sulfate ਅਗੇਨ 2K ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਂਡ 1 ਸਲਫੇਟ ਆਇਨ, that is I ਵੈਲਿਊ 3 ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 2 ਐਂਡ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ that is a 2 2 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। next the value of a Henry constant KH, that is a greater for gases with higher solubility, constant for all gases, greater for gases with lower solubility and not related to the solubility of gases। so answer, as we know in case according to Henry's law and Henry's constant, according to Henry's laws, that is P is equal to KH into X mole fraction। so KH can be calculated, that become equal to P over X। so value of Henry constant KH is greater for gases with lower solubility because our relationship है ਸਾਡੇ ਕੋਲ where KH that is a Henry's constant है, P is partial pressure of the gas in vapor phase and X denote mole fraction of solution। the KH that is a inversely proportional to the mole fraction, KH ਜਿਹੜਾ inversely proportional ਹੈ mole fraction ਦਾ। so in solution representing its solubility। so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ greater for gases with lower ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। KH ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇਕਰ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ colligative property of a solution depend upon the। so colligative property as already we know that is a number of solute particle and doesn't depend upon the nature of solute particle, depend ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। next colligative property of solution depend upon, so as we also we know that is depend upon number of moles of a solute particle। ठीक है। which of the following solution will have the highest or least freezing point। so 0.1 molar urea, 0.1 molar acetic acid, 0.1 molar NaCl। so answer that is a, again ਆਪਾਂ I value calculate ਕਰਾਂਗੇ यूरिया ਲਈ dissociation constant does not dissociate, so I value that is a 1 as it is ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। acetic acid will give the 2 ions acetate and H positive ion, NaCl will give the 2 ions Na positive and Cl negative ion, calcium chloride also give 1 Ca2 positive and 2 Cl negative and that is I value 3 ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ I value highest ਆ ਰਹੀ calcium chloride, so right answer that is a calcium chloride is a right answer। next is semi-permeable membrane permit the flow of, that is a solution, solvent, solute or neither solute or no solvent। so answer right is that is a solvent because semi-permeable membranes will give the permit the flow of a solvent। next the decreasing order of osmotic pressure of 10 gram
glucose, urea and sucrose are different temperature when dissociated in 400 ml of water separately is. So as we know the osmotic pressure that is pi is equal to CRT. So C concentration है जो सोल्व यूज़ करते हैं तो osmotic pressure P आ रहा W/M, ठीक है जी। सो अगर देखा जाए ग्लूकोज ਦੇ ਲਈ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਰਿਹਾ 180, यूरिया ਦੇ ਲਈ 60 है एंड सुक्रोज ਦਾ that is a 342। सो पार्शियल प्रेशर निकालते हैं ਆਪਾਂ गिवन वेट ओवर मॉलिकुलर वेट जो मॉलिकुलर मास। सो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ सोल्व करांगे 10/180, 10/60, 10/342। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा साढ़े को P2 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ P1, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ P3 ਆ ਜਾਏਗਾ, P2 P1 P3 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है मोलैरिटी ऑफ 900 ग्राम ऑफ प्योर वाटर इज। सो मोलैरिटी देखा जाए 900 ग्राम ऑफ प्योर वाटर दैट इज ए, सो दैट आंसर राइट आंसर दैट इज 55.5 मोलर। सो किस तरह आ रहा, सो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml, वॉल्यूम ऑफ 900 ग्राम ऑफ वाटर दैट इज 900 ml। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पहले निकाल लवांगे आप, ठीक है, 900/18 मोलर मास के नाल दैट इज 50 मोल। सो मोलैरिटी निकालांगे आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीपल बाई 1000। सो सॉल्व करांगे साढ़े को आ जाएगा 55.5 साढ़े को आ जाएगा, ठीक है जी। सो नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सल्यूट इन 2.5 मोलर एक्व सोल्यूशन इज। सो मोल फ्रैक्शन अगर देखा जाए सो आंसर सो निकालते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट दैट इज ए 2.5 मोल। सो मोल्स ऑफ वाटर दैट इज ए 1000/18 55.5 जो 55.56 निकाली आप हमने। सो मोल फ्रैक्शन हो जाएगी दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो आंसर आ जाएगा 0.043 इज द राइट आंसर, सो बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ सोल्यूशन कंटेन 80% बाय वेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.73। इट्स नॉर्मैलिटी इज अप्रॉक्सीमेटली, सो नॉर्मैलिटी कैलकुलेट करने लिए आप करांगे सब तो पहले सल्फ्यूरिक एसिड द मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करांगे दैट इज 98 ग्राम पर मोल एंड सल्फ्यूरिक एसिड कैन डोनेट 2 प्रोटोन H पॉजिटिव एंड 2 आ रहे हैं। सो इक्विवेलेंट वेट आप कैलकुलेट करांगे दैट बिकम 49 ग्राम इक्विवेलेंट। सो नॉर्मैलिटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप सोल्व करांगे 10x/t, ठीक है, इतने पुट करांगे सोल्व करांगे दैट इज 28.2 नॉर्मल आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट ऑन डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज डिक्रीजेज। सो अगर देखते हैं कॉमन साल्ट दैट इज सब तो पहले देखा जाए ऑन डिजॉल्विंग कॉमन साल्ट दैट इज ए नॉन वोलेटाइल सल्यूट विच लोअर द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एंड इवेंचुअली इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। सो इस विच क्या आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज ए इंक्रीजेज। जिस तरह आप देखते हैं कॉमन साल्ट जिदा हिल स्टेशन पर आप जो भी जाने स्नो ਨੂੰ क्लीयर करने के लिए भी उत्थे की है कॉमन साल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड यूज़ किया जाता है जोड़ा की करता है बॉइलिंग पॉइंट जो इनक्रीज़ कर देंदा, ठीक है, तो वो जल्दी ना मेल्ट हो जाती है। नेक्स्ट यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट अगेन यूनिट्स सिमिलर दैट ऑफ अबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट दैट इज ए KF दैट इज केल्विन kg पर मोल ऑलरेडी आप डिस्कस किया KTF की जगह तो B सीगा उत्थे बॉइलिंग पॉइंट के लिए। नेक्स्ट एक्व सोल्यूशन ऑफ मीथेनॉल इन वाटर हैज़ हैज़ वेपर प्रेशर दैट इज। सो जो भी देखते हैं मीथेनॉल तो वाटर दैट इज अ फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, बिटवीन दिस and then hydrogen bonding is stronger than that of a hydrogen bonding between the methanol molecule but the interaction are not as extensive as in water. So it has vapor pressure lower than that of methanol and higher than that of water, ठीक है। So right answer B option हो जाएगी। नेक्स्ट अगेन मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर दैट इज ए मोलैलिटी ਆਪਾਂ ऑलरेडी ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ मोलैरिटी वाला ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। सो नेक्स्ट as we know in case of density of pure water 1 kg per liter or mass can be calculated 1 into 1000 ml, so 100 gram। so number of moles अपन निकाल लेंगे 55.5 and molality again 55.55 आ जाएगा आंसर, ठीक है। so number of moles of NaCl in 3 liter of a 3 molar solution is, so as we know molarity number of moles divided by volume solution number of moles आ जाएगा that is a 3 into 3 that is a 9 आंसर, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ सल्यूट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए लीटर ऑफ डेसीलीटर सोल्यूशन इज as we know that is the molarity number of moles of solute volume solution 1000 मल्टीपल एंड मोल्स ऑफ solute निकाल लवांगे आप इतों
वैल्यू पुट करांगे तो आंसर साढ़े को आ जाएगा 1 मोल। ठीक है। ऑन डिजोल्विंग 1 किलोग्राम ऑफ वाटर कंटेन 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। The concentration of solution is the best expressed in about the units। सो इत्थे आपां मास देख लांगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, मास ऑफ वाटर, मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लवांगे। सिमिलरली कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉल्यूम सोल्यूशन निकालांगे आपां। सो साडे कोल आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मोल्स NaCl ऑलरेडी आपां डन कर लिया। नेक्स्ट दैट इज अ मोलैरिटी इज एक्सप्रेस्ड एज मोलैरिटी ऑलरेडी नो that is a mole per kg because the definition number of moles of solute dissolved in 1 kg of a solvent। So next, which of the following is not affected by the temperature? As we know, molarity is the term which is not affected by temperature because here as we know it's a definition। ठीक है। next the isotonic solution, again a very important question है। isotonic solution, the solution which having the same osmotic pressure। ठीक है। नेक्स्ट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द, अगेन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। ठीक है। एंड दैट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट ते डिपेंड करता। ठीक है। नेक्स्ट मोलैरिटी इज एक्सप्रेस्ड, मोलैरिटी एज वी नो डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सो आंसर इज मोल पर लीटर आ जाएगा साढ़े को। Next, which of the following is a not a, if which of the following is a colligative property? As we know, there are 4 colligative property in our syllabus, that is the elevation boiling point, the pressure in freezing point, relative lowering in vapor pressure, and osmotic pressure. So right answer that is a relative lowering in vapor pressure is the right answer. Next, which of the following is a binary liquid mixture except the negative deviation from Raoult's law? So negative deviation, that is a negative deviation, and that is shown by the mixture, that is a chloroform and acetone of the, because the formation of a hydrogen bond between the two molecules। ठीक है। so next a constant boiling mixture, that is a very important question, that is a constant boiling mixture that is also known as the azeotrophs। right answer is B option। ठीक है। next a pressure cooker reduce the cooking time because the heat is more evenly distributed, the because the boiling point of food under the pressure is elevated increase हो जाता। सो इसे करके की है pressure cooker time reduce कर देता cooking time। ठीक है। so as we know inside the pressure cooker that is the pressure increases and the surrounding pressure increase, and since the surrounding pressure increases boiling point temperature also increases, that means now the heat will increase the temperature of the system rather than boiling of water, and since cooking reaction speed up high temperature food cooks faster। ठीक है। next a camphor, that is also often used for molecular mass determination because it has a high value for cryoscopic constant। option A is right answer। ठीक है। next साढ़े को 2 और 3 marks numerical। so start करते फर्स्ट, a commercial available sample of sulfuric acid, that is a 15% sulfuric acid by weight, कैलकुलेट मोलैरिटी। सो वेट सानू गिवन है 15 ग्राम गिवन, और नंबर ऑफ मोल्स निकाल लवांगे सल्फ्यूरिक एसिड दे 15 ओवर 98 मोलर मास हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का। वॉल्यूम निकाल लांगे आपां, दैट इज अ मास ऑफ डेंसिटी। ठीक है। 90.9 ml आ रहा है। सेम नेक्स्ट मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, अगेन डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम सोल्यूशन 1000 मल्टीपल करांगे तो आंसर साढ़े को आ जाएगा 1.68 मोलर। सिमिलरली नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कमर्शियल अवेलेबल सैंपल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, that is a 38% HCl by weight, that density is given, calculate the molarity of acid। so mass of solution, molecular mass of HCl and moles of HCl निकाल लवांगे, volume of solution निकाल लवांगे इत्थे। ठीक है। and molarity लास्ट विच कैलकुलेट करेंगे। similarly the above numerical। ठीक है जी। next that is a calculate the mole fraction of ethanol in water in a sample which contain 95% ethanol by mass। so as we know that is a mass of ethanol 95 gram, molecular mass of ethanol that is a 46 gram आप calculate करेंगे। so number of moles of ethanol that is a 95 over 45, mass of water that is a 5 gram, and molecular mass of water 18 gram। so number of moles of water 5 over 18 ये भी निकाल लेंगे। so mole fraction of ethanol, number of moles of one component divided by total number of moles। similarly mole fraction of water
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो इत्थों भी कैलकुलेट कर लवांगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is a dissolved in 30 gram of water. Calculate mole fraction of glucose and water. So mass of glucose, molecular mass of glucose. So number of moles of glucose निकाल लांगे given mass over molar mass. Again similarly the water component, mass of water, molecular mass of water, number of moles of निकाल लांगे. So similarly mole fraction of glucose to water easily calculate करांगे number of moles of one component divided by total number of moles, ठीक है. Next है sugar syrup of weight 200 214 214.2 gram contain 34.2 gram of sugar, that is a calculate the mole fraction of sugar. So as we know weight of sugar syrup वो भी लिख लांगे, weight of water syrup, ठीक है, वो निकाल लवांगे ਆਪਾਂ, molecular mass ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 342. ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ ਨਿਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਨਿਕਾਲ ਲਾਂਗੇ. ਸੋ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਪ ਸਿਮਿਲਰ. ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਓਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ in Pascal is exerted by a solution that is prepared by dissolving 1 gram of polymer of a molar mass, ठीक है, in 450 ml of water at 37 degree. So WB सानू given a given mass of solute, that is a molecular mass. Next given है volume भी given है, volume सॉरी कैलकुलेट कर लवांगे इत्थे आपां, ठीक है, in the liter. Temperature already given, written in the Kelvin. So by using pi is equal to CRT, C is equal to N over V, ठीक है, N over V आ जाएगा. तो पाई इत्थों ਆਪਾਂ सोल्व कर लवांगे, ਸਾਡੇ ਕੋਲ पाई osmotic pressure ਦਾ आंसर आ जाएगा. Next that is good, calculate the molar elevation constant of water. It is given that the 0.1 molar aqueous solution of the substance boiled at 100.052 degree Celsius. So molarity अपन सानू given है, KB फाइंड करनी, TB given है, TB नोट भी given है, डेल्टा TB निकाल लवांगे आप, TB minus TB नोट. So as we know delta TB equal to KB into M, delta TB over M, that will give the KB value. So इतो KB ਦੀ ਸਾਨੂੰ आंसर मिल जाएगा. Next again important question, the addition of 0.643 gram of a compound to 50 ml of a benzene, that is lower the freezing point from 5.51 degree centigrade to 5.03 degree centigrade. Kf of benzene is 5.12. So WB सानू given है, WA भी सानू given है, TF सानू given है, TF नोट भी given है, KF भी सानू given है. डेल्टा TF निकालांगे पहले आप माइनस करके, TF नोट माइनस TF. So delta TF will also written as KF into M. इत्थों KF into M मोलैरिटी ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ MB ਇੱਥੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ MB ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ 156 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਮੋਲ. ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ boiling point of benzene is given when 1.80 gram of non-volatile non-ionization solute dissolve in 90 gram of benzene. So boiling point raised to 354.11 Kelvin. Calculate molar mass of solute. So WB भी given है, WA भी given है, TB नोट given है, TB given है, डेल्टा TB ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ कैलकुलेट ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है, elevation boiling point. So delta B become equal to KB into M, KB into M molality. So सारी वैल्यू पुट करांगे, सो सॉल्व करांगे, दैट इज 57.5 ग्राम पर मोल ਸਾਡੇ को राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट वन दैट इज ए 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्सड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट डिप्रेशन फिजिंग पॉइंट. WB भी गिवन है, WA भी गिवन है, मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर लांगे, KF ऑल्सो, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, मोलैरिटी टर्म वैल्यू सारे पुट करांगे. सो डेल्टा TF सानू मिल जूगा. So delta TF भी कल also written as delta TF equal to TF नोट minus TF. So इत्थों साढ़े को TF भी निकल जाएगा, that is 270.75 Kelvin. Next है साढ़े को 2 marks, that is a theory based question. Define colligative property. The colligative property are the properties whose value depend upon the number of solute particle and doesn't depend upon the nature of solute particles, ठीक है. There are 4 colligative properties. Next, what is the molar elevation constant or a bilirubin constant? So it is defined as the elevation boiling point for 1 molar solution, that is a solution containing 1 gram mole of a solute dissolved in
100 gram 1000 gram of solvent. So delta TB equal to Kb into m. So delta TB become equal to Kb when molality of a solution will become unity. Okay. Cryoscopic constant, again it is also defined as a depression in freezing point for 1 molar solution, that is a solution containing 1 gram mole of solute dissolved in 1000 gram of solvent. So delta TF equal to Kf into m. Okay. Next water factor, so it is defined as a normal ratio of normal molar mass to the observed molar mass. Okay. Or observed value of colligative property to the normal value of colligative property. Next important difference between osmosis and diffusion, that is osmosis. The process of osmosis takes through a semi-permeable membrane. No need of semi-permeable membrane. Osmosis involves movement of solvent molecules only, and in diffusion both a solute and solvent molecule can move. In osmosis the solvent move from lower concentration to higher concentration, and in diffusion that is a reverse phenomena. Osmosis is a limited solution, diffusion is a common in gases and liquid. Next I write on the factor affecting the solubility. So nature of solute and solvent which affect the solubility, temperature and pressure. Okay, so इन्होंने explain कराएंगे. Next है what are the factor affecting the solubility of gases in liquid. Again same type of factor. The solubility of gases in liquid depend upon the nature of gas and solvent, temperature and pressure. So वही तिन्ने phenomena इत्ते भी explain. Next are the why the vapor pressure of solution decrease when non-volatile solute is added. So as we know, non-volatile solution, that molecule replace the sum of the solvent molecule and surface on surface layer, and it will reduce the escaping tendency of the solvent molecule into the vapor phase, and hence lower the vapor pressure of the solvent and vapor pressure of solution, and therefore therefore the less than that of pure solvent at same temperature. Next, at what are the condition to get the accurate value of molecular mass? So solution should be dilute होना चाहिए, solution ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ non volatile होना चाहिए, and solute must not dissociate or associate in the solution. Next, are defined degree of dissociation or association. Again it is defined as a degree of association dissociation, number of moles of substance dissociated divided by the total number of moles of substance taken. And in case of degree of association, it is defined as a fraction of number of moles of substance associated divided by the total number of moles of substance taken. Next, which colligative property is preferred to measure the molecular mass? So osmotic pressure is prefer to measure the molecular mass, because osmotic pressure can be accurately measured in dilute solution, and then osmotic pressure measured at a room temperature. So next question, important question, difference between ideal and non-ideal solution. Again the interaction between the component are similar than that of pure components, and if interaction are different than that of pure component, that is a non-ideal solution. In case of ideal, delta H mixing and delta V mixing become equal to 0, and in case of non-ideal solution, delta H mixing and delta V mixing doesn't equal to 0, and an ideal solution that follow the Rolle's law or obey the Rolle's law, and in case of non-ideal they do not obey the Rolle's law. Okay. Next are difference between molarity and molality. Again this is basic definitions. In case of molarity, number of moles of solute present in 1 liter of solution, and in case of molality, that is the number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. Molarity, that is expressed in mole per liter, and molality mole per kg. And molarity, that become temperature dependent term, and molality, this is a independent term of temperature. So these are the most important questions of chapter solution chapter. So I hope all of you will get the full marks from this chapter. So all the best to all the students. Please like, share and subscribe. Thanks and all the best.